गुजरात के मेहसाणा के जीरा मार्केट में मंदी का माहौल देखा जा रहा है। गुजरात के मेहसाणा के जीरा बाजार में इस साल मंदी का असर दिखने लगा है। पिछले साल की तुलना में इस साल जीरे की कीमतों में 1200 रुपए तक की गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में जीरा बाजार 3600 से 4000 रुपए के आसपास चल रहा है और अनुमान है कि ये गिरकर 3200 रुपए तक पहुंच सकता है। जीरा बाजार की मंदी का एक प्रमुख कारण कैरी फॉरवर्ड माल का होना है, जिसमें 30 लाख बोरी का माल बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बिक्री घटने का अनुमान है। पिछले साल जीरे की 1.10 लाख बोरी उत्पादन हुई थी, जिसमें से 80 लाख का उपयोग हुआ था। इस साल 85 लाख बोरी के उत्पादन का अनुमान है, लेकिन 20% की कमी होने की संभावना है। फरवरी महीने में जीरे की कीमतें 3600 रुपए तक गिर चुकी हैं। अंदाज गणतरी મૂકવામાં આવે તો 1 કરોડ ને 10 લાખ બોરી જેવું ઉત્પાદનની ધારણા મુકાઈ અને એની ખપત એક્સપોર્ટમાં ચાલુ વર્ષે 45 લાખ બોરી એક્સપોર્ટ થવાનો અંદાજ મુકાયો છે અને ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ લગભગ 35 લાખ બોરી ગણવામાં આવે છે। આમ 80 લાખ બોરી જેવી ખપત પણ સામે 2024 દરમિયાન થઈ છે, જે 15/2/25 કેરી ફોરવર્ડ ગણવામાં આવે તો લગભગ 30 લાખ બોરી કેરી ફોરવર્ડ રહેવાનો અંદાજ છે, જે ખેડૂતો અને વેપારીઓ જોડે આ સ્ટોક કેરી ફોરવર્ડ થતો હોય છે। 2025માં આવશે એની સામે 80 લાખ બોરીની ખપત જે 2024માં થઈ એ ગણતો સામે 2026માં જે કેરી ફોરવર્ડ થશે એ પણ અંદાજે 30ની સામે 35 રહેવાની ધારણા રાખીએ તો ચાલુ વર્ષનું ભાવની જે ધારણા છે એ જેમ ગયા વર્ષે ઘટીને 4000 થયેલા વધીને 6200 થયા હતા। गुजरात के वडोदरा में नागरानी ग्रुप द्वारा आई फॉर यू प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को आंखों की देखभाल की जानकारी दी गई। प्रोजेक्ट आई फॉर यू सेंटर फॉर साइट में आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा नागरानी ग्रुप की 40 से अधिक महिलाओं ने आंखों की सेहत और देखभाल के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस प्रोजेक्ट में सेंटर फॉर साइट के डॉक्टर रूपल शाह ने महिलाओं को आंखों से संबंधित जानकारी दी। आंखों की देखभाल, रोगों से बचाव और समय पर उपचार के महत्व के बारे में बताया गया। डॉक्टर रूपल शाह ने आंखों से जुड़ी समस्याओं और उनकी रोकथाम के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। આજનો પ્રોજેક્ટ અમે નાગરાણી વડોદરા એક ગ્રુપ બનાવેલું છે, એ મેં પોતે જ બનાવેલું ગ્રુપ છે। એમાં 57 મેમ્બર્સ છે અને આ મેમ્બર્સને આંખને માટેની કાળજી એની માહિતી આપવા માટે ડૉક્ટરે સજેસ્ટ કરેલો પ્રોજેક્ટ છે। પોતે ડૉક્ટર થઈને પોતાના ક્લિનિકમાં અમને બહુ જ સરસ સગવડ આપીને આટલું સરસ જ્ઞાન આપ્યું, એના માટે અમે ડૉક્ટરના ખૂબ ખૂબ આભારી છે। અને હા, હું વીએનએમની પણ આભારી કે અમને આવીને આવી સરસ સેવા આપી, એના માટે થેન્ક યુ વેરી મચ। આંખની બધી તકલીફો કેવી રીતે થાય છે, એનો ઉપાય કેવી રીતે કરાય અને ક્યારે ડૉક્ટર પાસે જવાય એની અગત્યતા વિશે સમજાવ્યું। અને ડૉક્ટર એની સમજણ આપણા કરતાં વધારે હોય અને ડૉક્ટર આપણી કાળજી ખરેખર રાખી રહ્યા છે અને ડૉક્ટર એમાં ખુશ છે કે જ્યારે આપણે સાજા થઈએ છીએ, એની અગત્યતા સમજાવે છે। नागरानी जो ग्रुप है वो बहुत लेडीज़ ऐसी हैं जिनको बहुत कुछ जानना होता है, तो उनकी जो प्रेसिडेंट है इस बार नैना जी, उनको मैं मिलने गई थी तो उन्होंने बताया कि अगर कुछ आँख के बारे में हो सके तो वो करते हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ, अगर आँख के बारे में कुछ जनरल अवेयरनेस हो तो वो अच्छा है पब्लिक के लिए, तो इसलिए हमने ये सोच के प्रोग्राम रखा था। आँख को अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत दिखाने जाना है, पर आपकी उम्र अगर 40 से ऊपर है तो एक बार तो आँख चेकअप करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि कोई डिज़ीज़ ऐसी होती है कि जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं और जब आते हैं तब बहुत लेट हो चुका होता है, तो दिखाने जाना ज़रूरी है। वैसे ही स्मॉल चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे हैं उनको भी एक बार दिखा देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी एक ही आँख में नंबर होता है और वो आँख लेज़ी हो जाती है, फिर उसमें नज़र नहीं आ सकती है। इसलिए छोटे बच्चे और
40 के बाद एक बार तो आँख दिखाना बहुत आवश्यक है। और आँख का कोई भी सिम्टम होता है, बार बार लाल होना, खुजली आना या देखने में कभी कभी तकलीफ़ होनी, दर्द होना, वो कुछ संदेशा दे रहा है आपको, तो आपको आँख के डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। गुजरात के वडोदरा में सरदार बाग स्विमिंग पूल शुरू करने की मांग की जा रही है। वडोदरा शहर के अलकापुरी इलाके में स्थित सरदार बाग स्विमिंग पूल पिछले काफी समय से बंद पड़ा है। इस मामले को लेकर सरदार बाग सेवा सहयोग स्विमिंग पूल के सदस्यों ने सोमवार को मेयर से मुलाकात की और स्विमिंग पूल को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। स्विमिंग पूल पिछले 6 महीनों से बंद है और पुल के तल में पानी का लीकेज हो रहा है। इस कारण से सदस्यों ने मेयर से ग्राउटिंग और अन्य जरूरी मरम्मत करवाकर पुल को तत्काल चालू करने की अपील की थी। સરદાર બાગ સ્વિમિંગ પુલ છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી બંધ હતો, ત્યાર પછી કંઈ 2-4 મહિના માટે ચાલુ કરવામાં ફરી પાછો 6 મહિનાથી ગયા વખતે રેલ આવી ત્યાર પછી બંધ થઈ ગયો છે, તો હજી સુધી ચાલુ નથી થયો। આ અંગે અમે રજૂઆત કરવા માટે ડેપ્યુટી મેયરશ્રી એમને મળવા માટે આવ્યા હતા। એમની રજૂઆત કરી છે। એમણે એવું કીધું છે કે ભાઈ 1 મહિનો કે 1.5 મહિનાની અમે ફરી પાછો સ્વિમિંગ પુલ ટેમ્પરરી માટે ચાલુ કરી દઈશું। પરમેનન્ટ સોલ્યુશન માટે એ લોકો રાહ જોઈ છે કે ભાઈ શું કરવું એને માટે, પણ ટેમ્પરરી એ લોકો ચાલુ કરી આપશે એવી આશ્વાસન એમણે આપ્યું છે। એવું લાગી રહ્યું છે। અમે ઘણી વખત રજૂઆત કરી છે આ અંગે। એના પહેલાં 5 વર્ષ માટે બંધ રહ્યો હતો। એ અંગે બી અમે દરેક જણને મળ્યા હતા, મ્યુનિસિપલ કમિશનરથી લઈને કલેક્ટરથી, ધારાસભ્યથી, સંસદ સદસ્યને બી મળ્યા હતા, પરંતુ આનો કોઈ નિવેડો આવતો નથી। ટેમ્પરરી આ લોકો ચાલુ કરે છે અને ફરી પાછો બંધ થઈ જાય છે, એવું થાય। मेयर ने इस मुद्दे पर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन देते हुए कहा कि स्विमिंग पूल 1 से 1.5 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। લગભગ જે સરદારબાગ સ્વિમિંગ પુલ છે જેમાં જમીનની અંદરથી ટાઇલ્સની નીચેથી પાણી ફૂટવાના શરૂ થવાના કારણે અને કોઈક જગ્યાએ ટાઇલ્સ તૂટેલી હોય, 1-2 સભ્યોને પગમાં ટાઇલ્સ તૂટેલી છે એવો અનુભવ થતાં તેમના દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી, એટલે એને અત્યારે આપણે રિપેરિંગમાં લીધો છે, એટલા માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે। લગભગ 1.5 મહિના જેવી કામગીરી ચાલશે અને એની ટાઇલ્સ જે જરૂરી હશે તે ટાઇલ્સ બદલવાની, તો સાથે સાથે જે એનું ડાઇવિંગનું જે બોર્ડ છે એ ડાઇવિંગનું બોર્ડ પણ પૂર્ણપણે જર્જરિત થઈ ચૂક્યું છે અને એ જર્જરિત હોવાના કારણે કોઈને એના કારણે પણ કોઈ ઈજા ન થાય, આ બધી જ વસ્તુઓનો વિચાર કરીને અને સાથે સાથે જે જમીનમાંથી પાણી ફૂટે છે, કારણ કે એની બાજુમાં એક તળાવ આવેલું છે અને આ તળાવ કરતાં પણ સ્વિમિંગ પુલની થોડો નીચાણમાં છે, જેના કારણે જ્યારે વરસાદની સિઝન હતી ત્યારે આ બધા જ વિસ્તારોમાં પાણી પણ હતું, તો સાથે સાથે તળાવ ફૂલ ભરાયેલું હતું અને તળાવ કરતાં નીચાણવાળા વિસ્તારમાં બાજુમાં જ આવેલો સ્વિમિંગ પુલ તળાવ કરતાં પણ નીચાણમાં હોય એ વખતે બંધ કરવાની, નાગરિકોની સુરક્ષાને ધ્યાને લેતા બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી। પછી પાછો કાર્યરત કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આ જે ટાઇલ્સ તૂટી છે એવો તેમના દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી, તો સાથે સાથે અંદરથી પાણી ફૂટી રહ્યા છે, તો એના માટેનું જે પણ રિપેરિંગ કરવાનું છે, નાના મોટા રિપેરિંગની કામગીરી છે જે હાથ ધરવામાં આવનાર છે, જેથી કરી અને આજે પણ અધિકારીશ્રીઓ દ્વારા વિઝિટ કરવામાં આવી છે અને લગભગ 15-20 દિવસની કામગીરી છે, પરંતુ જ્યારે કામગીરી કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવે ત્યારે અંદર કેટલી ડેપ્થ સુધી કામગીરી કરવાની છે તેની ખબર પડતી હોય છે, તેથી કરીને લગભગ 1.5 મહિના જેટલી કામગીરી એવું અત્યારે ધારી રહ્યા છે કે 1.5 મહિના એટલે માર્ચના બીજા વીકમાં અથવા તો ત્રીજા વીક સુધીમાં કરી શકાય તેવી ધારણા છે। અત્યારે જે પણ સ્વિમિંગ પુલો વડોદરામાં આવેલા છે, આ દરેક સ્વિમિંગ પુલમાં વાર્ષિક નિભાવણી માટે એને બંધ કરવામાં આવતા હોય છે, જેમાં એ લોકોએ નવેમ્બર મહિનામાં કારેલીબાગનું, તો ડિસેમ્બર મહિનામાં જે વાઘોડિયા રોડ પર રાજીવ ગાંધી સ્વિમિંગ પુલ આવ્યું છે તે, તો જાન્યુઆરી મહિનામાં સરદાર બાગવાળું જે સ્વિમિંગ પુલ છે તે, અને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં લાલબાગ સ્વિમિંગ પુલને એ લોકો વાર્ષિક નિભાવણી માટે બંધ કરતા હોય છે, જેની અંદર એસિડ વોશ કરવામાં આવતો હોય છે। પહેલાં સંપૂર્ણપણે સ્વિમિંગ પુલને ખાલી કરીને તેને એસિડ વોશ કરવામાં આવતો હોય છે, ત્યારબાદ એની મોટર રિપેરિંગ હોય કે પછી મોટરનું સર્વિસિંગ કરવાનું હોય કે પછી એનું ફિલ્ટર પ્લાન્ટ જે હોય છે તેની પણ સર્વિસિંગ કરવાનું હોય છે, અને આ બધું એક લાંબી પ્રક્રિયા દ્વારા, એટલે ચોક્કસ સમય માંગી લેતી પ્રક્રિયા છે જેમાં સમય લાગતો હોય છે, અને આવી રીતે 4 મહિના જે ચોમાસું પૂર્ણ થયા બાદ શિયાળાનો સમયગાળો કે જ્યારે
સામાન્ય રીતે લોકો સ્વિમિંગ પુલમાં જવાનું વધારે પડતી ઠંડીના કારણે ટાળતા હોય છે, ત્યારે આ 4 મહિના એવા હોય છે કે જેમાં આપણે આ રીતેનું જે પણ એનું સર્વિસિંગથી માંડી અને જે પણ વાર્ષિક નિભાવણી માટે જે કામગીરી કરવાની હોય છે તે આપણે કરી શકતા હોઈએ છીએ. એટલે આ 4 મહિના સુધી આવી રીતે અલગ અલગ સમયે આ સ્વિમિંગ પુલો બંધ કરવામાં આવતા હોય છે. गुजरात के वडोदरा के सुगंध लक्ष्मी सोसाइटी में एसपी मोटर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वडोदरा के सुगंध लक्ष्मी सोसाइटी के स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और कलेक्टर व जीपीसीबी को बार बार इस मुद्दे पर अपनी शिकायतें दर्ज करवाईं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एसपी टाटा मोटर्स अवैध तरीके से गैरेज चला रहा है, जिससे सोसाइटी में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। एसपी मोटर्स के गैरेज में 4 व्हीलर गाड़ी का काम चल रहा था। अचानक ओवर स्पीड कार ने दूसरी कार से टकराकर दुर्घटना कर दी। दुर्घटना के बाद दीवार में गाड़ी जा घुसी, जिससे सोसाइटी के लोग भयभीत हो गए। આ સોસાયટીમાં 30 મકાન છે, નામ ટાટાનું છે પણ ટાટાનું ગેરેજ નથી. આ એક મહેસાણાનો પટેલ છે, એના બરોડા ખાતે 4 ગેરેજ છે. શું એની પાસે ટાટાની એજન્સી છે? નથી, એવું નથી. પણ આ ગેરેજ ટાટાનું ગેરેજ નથી. નિહલ પટેલ મેન વસ્તુ એક જ છે, એ લોકો કલર કરવા માટે જે ગાડીઓ આવે છે એની ભઠ્ઠી અમારા કોર્ટની અડીને જ છે. શું અને એ શું કરે એ લોકો કે કલર કર્યા પછી ટર્પેન્ટ, તમે જાણતા હશો કે ટર્પેન્ટાઇન એમાં યુઝ થાય. સાંજે 7 વાગે જ્યારે એમને ઘરે જવાનો ટાઈમ થાય ત્યારે એ બારણા ખોલી કાઢે. એ લોકો ઘર ભેગા થઈ જાય અને અમારા ભાઈ ટર્પેન્ટાઇન ખાવાનો 72 વર્ષની ઉંમરે અમારા ફેફસા અમારે ખલાસ કરવાના. કેટલી વાર એમને કહેવામાં આવ્યું પણ કોઈ સાંભળતું નથી. આ ભાઈએ ઓલરેડી કોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો, કલેક્ટરને મળી આવ્યા, બધાને મળ્યા. જીપીસીબીની કોઈ એમની પાસે એપ્રુવલ છે નહીં, છતાં બી એ લોકો પેન્ટિંગ કરીને અને એક્ઝેક્ટલી તમે જુઓ તો જો ચેક કરવા આવો તો આવો 6:30 થી 7 જ્યારે એમને ઘરે જવાનો ટાઈમ થાય ને ત્યારે જે એમની જે ઓન છે, ઓન જેને ઓન કહેવામાં આવે છે કે જેમાં કલર કરવામાં આવે છે, એમાં ટર્પેન્ટાઇન મેક્સિમમ યુઝ થાય અને એ પછી 6:30 થી 7 વચ્ચે ઘેર જતાં પહેલાં એ ખોલી કાઢવાનું. પછી એની જે ઉડીને જે આવવું હોય સોસાયટીવાળા મરે. 24 કલાક એમનો અવાજ આવતો હોય છે અને એટલો બધો તીણો અવાજ આવે છે, નોઇઝ પોલ્યુશન. બપોરે ઊંઘવા નથી દેતા કોઈને. નાના છોકરાને ઊંઘવા મળતું નથી. શું છોકરાની પરીક્ષા હોય ગમે તે હોય પણ એમનો તો ધડાધડ. આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા નથી, આ રેસિડેન્શિયલ એરિયા છે. જ્યારે કલેક્ટરની ઓફિસમાં જ્યારે અરજી કરી કલેક્ટર ઓફિસે બોલાવવામાં આવ્યા હતા ત્યારે એમની પાસે એવા કોઈ પુરાવા નથી. અમે માગીએ કે આ બંધ થઈ જવું જોઈએ અહીંયાથી. બાળકોને બી નુકસાન જાય. ટર્પેન્ટાઇન તો ખરેખર જે મને ખબર હોય ટર્પેન્ટાઇન પર શું એની ઇફેક્ટ થાય. આજે 72 વર્ષની ઉંમર છે, હું આઈપીસીએલમાં તો કેમિકલ પ્લાન્ટમાં કામ કરતો, મને ખબર છે કે ટર્પેન્ટાઇનની શું અસર થાય. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। वडोदरा का कमाटी बाग जो एक ऐतिहासिक स्मारक होने के साथ ही साथ शहर की पहचान भी है, और ये सिर्फ एक बाग नहीं है बल्कि हम कह सकते हैं हमारी धरोहर है, जहाँ इतिहास, हरियाली और वन जीवों का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। और यहाँ पर पर्यटक ना केवल सुकून के पल बिताने आते हैं बल्कि यहाँ का प्राणी संग्रहालय भी अनगिनत जीव जंतुओं का बसेरा है। और कमाटी बाग के इसी प्राणी संग्रहालय में कुछ नए मेहमान आ पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत केवड़िया से यहाँ पर 6 नए साबर हिरन लाए गए हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं कि 4 मादा सांबर है और 2 नर सांबर है। और ये वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए बेहद एक खास खबर है, क्योंकि 2021 में यहाँ पर कुल 14 सांबर थे, जिनमें से 13 सांबर की मौत हो गई थी एक बीमारी के चलते। और अब जब यहाँ पर नए सांबर लाए गए हैं तो ये पर्यटकों के लिए एक नए आकर्षण का केंद्र बनकर उभर सकता है। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सोमवार को केवड़िया जू से 2 नर और 4 मादा सांबर वडोदरा लाए गए थे। बदले में वडोदरा ने एक जोड़ी गोल्डन फेजेंट केवड़िया को भेजी है। ये 6 सांबर तंदुरुस्त हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इनसे भविष्य में नए ब्रीडिंग के माध्यम से एक नई ब्लड लाइन की शुरुआत होगी। महज 35 दिन पहले कमाटी बाग जू में 9 नए प्राणी लाए गए थे, जिनमें सियार, भेड़िया, झरक और जंगली कुत्तों की जोड़ी शामिल थी। ये भी कई वर्षों बाद पहली बार था जब एक भालू कमाटी बाग प्राणी संग्रहालय में आया था। इन 6 सांबरों की आगमन के बाद अब अगले सप्ताह 4 कालेयार हिरण लाए जाने की संभावना है।
जैसा कि आपने देखा कि केवड़िया से लाए हुए 6 साबर हिरन यहाँ आ पहुंचे हैं और ये ना केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा बल्कि कमाटी बाग के बायोडायवर्सिटी को भी समृद्ध करेगा। तो अगर आप भी इन हिरन से रूबरू होना चाहते हैं तो कमाटी बाग में अपने परिवार और दोस्तों के लिए साथ जरूर आए और ऐसी कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM TV। गुजरात के सूरत के कैलाश नगर BRTS बस स्टॉप के पास एक 3 से 4 महीने का बच्चा मृत हालत में पाया गया है, जिसके बारे में पुलिस ने जानकारी दी है। सूरत सिटी के पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में कैलाश नगर BRTS के पास में एक भ्रूण मिला है, जिसकी इनिशियल जो हमने पूछताछ की है वो हॉस्पिटल की तरफ से 4-5 महीने का भ्रूण का उम्र बताया गया है और मेल भ्रूण है और ये मृत अवस्था में मिला है। तो अभी पांडेसरा पुलिस स्टेशन में सरकार की तरफ से गुनाह दाखिल करने की प्रक्रिया अभी चालू है और आसपास के CCTV देखने के लिए टीम को लगा दिया गया है कि किसने ये फेंका होगा। तो सारी तपास चालू है, इसमें जो भी अपडेट आएगा वो आपको अपडेट कर दिया। ये तीसरी घटना है, पहला डिटेक्ट हो गया था और अभी इसको भी हम डिटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल एरिया में कई बार ऐसा होता है कि अनैतिक संबंधों के चलते और कई बार होता है कि कोई सिंगल लड़की है वो माँ बन जाती है, इस तरह की चीज़ों के चलते और सामाजिक दबाव में आके वो अबॉर्ट करवा लेते हैं। कई बार वो अबॉर्शन जो है वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से भी ये लोग करते हैं, संस्थागत भी उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, कोई पिल्स लेके या इस तरह का भी लास्ट टाइम में एक घटना सामने आई थी। तो वो बहुत ही माता के जीवन के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। ये एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग आरोग्य विभाग, कुछ NGOs, इनके भी हम सपोर्ट लेके और हमने पांडेसरा, खटोदरा इन विस्तार में हमने अवेयरनेस के लिए भी कार्यक्रम अभी चालू किए हैं हमारी C टीम की मदद से। तो उन पे भी हम काम कर रहे हैं और इस तरह का जो ये है ये तो गंभीर गुनाह है, इसमें जो भी इन्वॉल्व रहेंगे उनके खिलाफ तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। पर सामाजिक रूप से भी हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं बने और इस तरह की जो MTP के जो किट हैं, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के किट सेल होते हैं, उन पे भी हम लोग कंटिन्यू डिकोय ट्राई कर रहे हैं। तो अगर कोई मेडिकल की शॉप की या किसी डॉक्टर का उसका भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगा तो उन लोगों के खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। सिख दंगे के एक और केस में बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। सिख दंगे मामले कोर्ट 18 फरवरी को सजा सुनाएगी। इस मामले में 41 साल बाद फैसला आया है। ये केस 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। दिल्ली दंगों में सज्जन के खिलाफ 3 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं, एक में वे बरी हो चुके हैं। इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सज्जन तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में IPC की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 के तहत केस दर्ज किया गया था। 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद दिल्ली में 5 सिखों की हत्या और गुरुद्वारा जला दिया गया था। इसी केस में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अब एक और मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है।